This is NAVEEN BHASKAR. Today I am going to unboxing my tablet. Its model number is M10. And firstly, I want to tell about these features. The features is firstly, it's coming with full HD screen display, and it's NVIDIA technology, NVIDIA audio. That is a good, and also dual front speaker. That is a very good in this tablet. And also this is the screen is 25 centimeter, and also is coming with a Snapdragon 450. That is a good processor, but it is enough for the tablet. And another is coming with NVIDIA audio, and this is the 2 GB plus 16 GB storage, RAM and ROM both. And in this tablet, the other feature is the battery. Battery is the very good, about 4850 mAh battery. It's running on screen time is 8 hours approximately. Stop. Now I'm going to open this unit, and firstly seal lock by Lenovo, and it is cut, and another is cut from here. Oh, this is so hard. Company is very good and packing is so tight. And now open this tablet. Oh my god, very good packing. And here is the tab, looking very good. And this is the tab. And again I want to show what is the box inside. It is a user guide manual, and oh my, another thing is SIM ejector tool. And this is the charger. I think it's Type C model. Yeah, it's a Type C, and put it this side here. And this is a charger. It's a normal charger, 5 volt 2 ampere. It's not fast charging in this box. And again I think nothing in the box. Friends, now I'm going to tell about a Lenovo laptop. That is model number is Tab M10. So friends, I'm deeply study about this tab, and I'm going to tell about this pro and con, and divided into two sections. That is, one thing is pro and one thing is cons. What is the con in the tab, and what is the pro in the tablet? Firstly, I want to tell about pro, because everybody want to know about pro firstly, and then cons then after. So firstly, I prepare notes about deeply study about the pro and cons, so that I want to tell about it. Firstly इसमें pro क्या है? Firstly इस टैब का डिस्प्ले क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा डिस्प्ले क्वालिटी IPS है. और अनदर थिंग है इसका बिल्ड क्वालिटी आपको काफ़ी अच्छा है, मेटल का है, मेटल बिल्ड क्वालिटी है, और लैपटॉप देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव है. और सेकेंड थिंग इन दिस लैपटॉप इज डुअल फ्रंट स्पीकर. कोई भी लैपटॉप में जल्दी डुअल फ्रंट स्पीकर नहीं मिलता, वो भी डॉल्बी एटमॉस के साथ, ताकि काफ़ी अच्छा फीचर्स है इस लैपटॉप में. और एंड सेकेंड अनदर थिंग इज हियर इज टाइप सी पोर्ट. इसमें टाइप सी पोर्ट दिया हुआ है, ताकि आजकल का 3rd जनरेशन का पोर्ट है, बहुत अच्छा है. और another thing is processor is okay for this laptop. And another thing is it supported 4G, and it's coming with NVIDIA audio. तो अभी इस audio पे आ रहा है. In maybe future it coming with NVIDIA Pi, because Pi is the latest. I think it come soon. And the battery is talk time 8 hours. And that is a good quality of this laptop. Sorry, tab. And another thing is now I'm going to con side is the firstly
it is the टाइप सी चार्जर है, बट ये फास्ट चार्जर के साथ नहीं आता है। तो इसमें बैटरी चार्ज करने में आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि इसका बैटरी काफ़ी बड़ा है। 4850, ये काफ़ी बड़ा बैटरी है। तो अप्रोक्स 3 आवर्स एंड 3.5 आवर्स एंड 4 आवर्स लग सकता है बैटरी को चार्ज करने में। और अनदर थिंग है कि इसमें आपका प्रोसेसर आई थिंक अच्छा है अकॉर्डिंग टू द यूजेज, बट इट इज़ नॉट गुड फॉर द हेवी यूजेज। बिकॉज अगर आप हेवी यूज करते हो, लाइक गेम खेलते हो, तो इट इज़ नॉट गुड, बिकॉज द प्रोसेसर इज ओनली फॉर ए नॉर्मल यूजेज। मैनी ऑफ फ्रेंड्स आस्किंग मी, यानी बहुत सारे मुझे क्वेश्चन किया कि मैं इसमें पबजी गेम खेल सकता हूँ। तो मैंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि आप इसमें पबजी गेम नहीं खेल सकते। अगर आप पबजी गेम खेलते हो तो आई थिंक चलेगा, बट जो पबजी गेम काफ़ी हेवी है और इसका प्रोसेसर भी थोड़ा लो है और इंटरनल स्टोरेज भी कम है। तो आई थिंक ये पबजी सपोर्ट करेगा लेकिन अच्छे से वर्क नहीं करेगा। तो इट इज़ अ बैड थिंग। एंड अनदर थिंग है कि इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें वॉइस कॉलिंग नहीं है। इसमें सिम है, 4G सिम सपोर्ट करता है, बट ओनली फॉर द नेट यूजर, नॉट फॉर कॉलिंग। इट इज़ अ वेरी ऑन साइड ऑफ दिस टैब। And another thing is, here is the notification light, but here is not light sensing to balance the डिस्प्ले का लाइट जो होता है कि जैसे कि सन में गए तो डिस्प्ले तेज होता है, बट ये ऑटो ब्राइटनेस नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा कॉन्स है, क्योंकि मैं 15,000 का टैब परचेज कर रहा हूँ तो इस सारी चीज़ फीचर्स होनी चाहिए। बट ओवरऑल मैं देखूँ तो टैब अच्छा है, लुक वाइज, यूजेज वाइज, रफ एंड टफ यूज है और डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छा है। तो इसमें नॉर्मल यूज के लिए टैब बहुत अच्छा है और हम बहुत अच्छे से हम टैब को चला सकते हैं, यूज कर सकते हैं और बहुत ही बेनिफिशियल है टैब। और मैं इस टैब को भी अनबॉक्स कर रहा हूँ, ऑन कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं इस वीडियो को। मैं अभी ऑन कर रहा हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है इसको ऑन करने में। ओके सर जी, कैसे हैं आप सर? बिल्कुल बढ़िया सर। Sir, you are my friends. So today you use this tab. So basically, I want to know about your experience about the tab, and today you use this tab. So can you tell me your experience of my viewers, my YouTube viewers, sir? बिल्कुल, absolutely. Okay. Before buying this tablet, I was a bit actually skeptical about spending $15,000 on this tablet. But after using and reading the reviews, and especially my friend NAVEEN, he is the tech guru in our group. He actually advised me to buy this tablet, okay, because it was really getting hectic for me to just carry laptop to read my PDFs. Okay. But then the best thing, I'm telling the best thing about this tablet is how it switches to landscape mode and easily to the reader mode. That is the best thing. This is a unique feature of this laptop. Okay. No, I have already used the Sony X series and various tablets. Okay. Another best feature of this tablet is that even an iPad for a 16 GB, yes, the iPad covers 10 GB for just software. Okay. But in this, you basically get 8 GB free. Can you show my viewers, sir? Yeah, sure. Yeah. You get 8 GB free. Yeah, if no, and another. Okay. Now, as a guy who lives with his family and who knows how much family and the kids love tablets because of the big screen, so this tablet actually comes with a family-friendly feature. Really? Okay. And use that feature? No. It's my first day, so I'm going to use it just for myself, okay. not for the family. Okay, sir. Other than that, I think it comes with the Netflix and everything preloaded. Sir, can you tell me about you experience your speaker quality, because it's Lenovo says it comes with Dolby Atmos. Yes, the speaker quality is absolutely astounding because I have used and watched 2 or 3 movies on this. Sir, you are also a music lover, so sir, can you clearly explain, sir? Because you are a music lover, you really hear sounds. Yes. So what happens is nowadays every major company writes Dolby Atmos, Dolby Dolby JBL sound, AV sound, but they actually don't provide the quality that we expect from the
But this Lenovo laptop comes with a really good speaker with all the processing that you will not, as a music and audio file, you will not going to waste this tablet because you are definitely going to love the loudspeaker. Okay sir, okay, thank you. And yeah, थैंक यू वेरी मच सर। मुझे आपसे बात करके अच्छा लगा और मुझे आप मुझे अपने व्यूअर्स को बताएं, मुझे बहुत अच्छा लगा। So this is my friend Rajat Gupta and he is also a very good knowledge about the laptops and not technical. more than him, not more than him. Okay. हाय फ्रेंड्स, तो अब तन्मय जी की कमान नवीन साहब ने संभाल ली है और हम पूछना चाहेंगे तन्मय साहब से कि आपको कैसा लगा आज यूजेज इसका। वैसे तो रजत मैंने आज ही इसको यूज़ किया है, पर लैपटॉप टैब बहुत अमेजिंग है ये। और मैं कैमरा क्वालिटी पहले बताऊंगा आपको, क्योंकि कैमरा तो सबको पसंद होता है बेसिकली। तो 2 मेगापिक्सल इसका फ्रंट कैमरा एंड बैक कैमरा 5 मेगापिक्सल है, बट एज अ क्वालिटी की बात करूं तो कैमरा एक्चुअल में 5 मेगापिक्सल ही मिलेगा आपको, एक्चुअल में 2 मेगापिक्सल मिलेगा, नो डाउट। क्लियरिटी बहुत शानदार है। और अनदर पॉइंट इसमें रिजल्ट मुझे पसंद आया है इसकी थिननेस, काफी स्मूथ है, काफी पतला है, फ्लेक्सिबल बहुत है, बहुत मजेदार टैब है। मैं काफी इंजॉय किया मैंने इस टैब को। और रजत अमेजिंग बात क्या है कि हम इसके साथ 3 से 4 लोग बैठ के मूवी देख सकते हैं। क्रिटिकल एंगल यहाँ पे डिसाइड होता है, क्योंकि कोई भी सीन कटने वाला नहीं, कोई भी चीज फ्लक्चुएट भी नहीं होगा। और क्लियरिटी की बात की जाए, डिस्प्ले की बात जाए तो उम्दा है। इस रेंज में इससे बेहतर मेरे हिसाब से मैंने कभी एंजॉय नहीं किया। 15,000 में इम्पॉसिबल। 15,000 बहुत अच्छी प्राइस है और इसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए ये बहुत बढ़िया टैब लगा है मुझे। तो रजत मैं काफी सैटिस्फाइड हूँ इस टैब से। वैल्यू फॉर मनी। ओके रजत, तो चलिए। Thank you friends, thank you friend to watching my YouTube channel and don't forget, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना जरूर करना प्लीज। एंड अगर कोई भी क्वेश्चन हो अबाउट दिस टैब Lenovo टैब M10 तो मुझे आप क्वेश्चन कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन डालना, मैं जरूर आपको हर क्वेरी का मैं आपको आंसर दूंगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स।